What's the last text you sent to anyone? I texted you only. Right. Hi, Abhay. How are you? I am doing absolutely fine. Great. Things have been amazing. So I'm very happy. That's so nice. That's so, and I would love to congratulate you for your role as Salman of Kalyan. Oh my goodness, what an amazing character, and what a role that you have played in Family Man too. Thank you so much. Thank you so much, Ria. I'm really glad that you liked it and everyone's liking it. So I'm very happy with the response. So tell us something about it. How was the experience on, while you were shooting? Oh, the experience was great. Absolutely. It was mesmerizing because having such legendary people on set like Manoj sir and Rajan DK sir and of course director Supan sir. It was a very fun, loving learning experience, as I've said earlier. Also, I enjoyed it thoroughly from the beginning of it. From this, even in fact, from the starting of the show, when I got selected for the part and we started reading and all the things were happening, I was thoroughly enjoying it. That's super amazing. That's so nice. So, what are you doing these days in the Corona time? I know the entire, the country is in lockdown, and Mumbai especially. So, how are things? Things have been great actually. Earlier we used to think about Corona, but now it's an old excuse to just get off from work. I think it's the best time which one can utilize and try and plan good things for themselves and plan their life, how they want to do and how they want to go forward. So I am actually trying to utilize my time in the best way because I feel time ये वक्त कभी आएगा नहीं वापस कुछ भी आ जाएगा लोग आपकी लाइफ में आके चले जाएंगे सब कुछ हो जाएगा बट ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा so I'm trying to find my best way to just learn within this time and just keep working and keep myself active as far as acting also is So, concerned and my personal life also and just okay. yeah तो क्या नया hobby या क्या? What you have started doing something new in this entire lockdown? uh, I actually haven't started anything new as such but बहुत सारी hobbies हैं जो आके चली गई और आएंगी भी ऑनेस्टली तो गिटार मैंने सीखने की कोशिश की थोड़ा बहुत सीखा उसके बाद वो हॉबी आके चली गई और just I'm finding reading actually these days a little fascinating मैं बहुत पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ना मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने में बिल्कुल बहुत आलसी था मैं स्कूल से लेके अभी तक मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था बट फ्रॉम लास्ट 6-7 months I don't know how the interest developed but I'm reading a lot of So, since you talked about school, and as I know, and as all of us know, you come from Panipat, Haryana. So, do you miss that? Like, do you miss the city? Because right now you're in Mumbai. Of course, being at your hometown is always the best thing with your parents actually. And आप वहाँ होते हो तो you actually feel at home and everything. Of course, Bombay has always also been my second home. बट एक डिफरेंस होता है आप घर पर अपने घर पर होते हो और आप कहीं बाहर काम कर रहे होते हैं एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट आई एम वेरी अटैच्ड टू माय रूट्स और मैं यू कैन कॉल मी अ मामाज बॉय तो मैं मम्मी के पास रहता हूँ उनके हाथ का खाना खाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है That's so sweet. That's so sweet, and that's so genuine. Actually, Hmm. what next? Are we soon gonna see you in the Bollywood, or is there some new project, interesting project? Because after Family Man 2, there is a complete dhamaka that you have done. नहीं मैं धमाका ही करने आया था एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा मैं एटम बॉम्ब प्लान कर रहा था बट ये न्यूक्लियर हो गया तो बहुत ही अच्छा बहुत ही लवली रिस्पॉन्स आया ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि लोग इतना प्यार करेंगे कैरेक्टर्स को और इतना सराहा जाएगा इतना प्यार मिलेगा लोग फीमेल अटेंशन की भी बात कर रहे हैं बट आई बिलीव दोनों ही तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है एंड आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट कोरोना की वजह से थिंग्स हैव स्लो डाउन सो इट्स जस्ट काइंड ऑफ गेटिंग बैक टू द नॉर्मल थिंग एंड yeah, a few more projects in line in talks with let's see fingers crossed. Fingers crossed, right? So, Abhay, tell us about something Man Bairagi. Like,
2021 where it's supposed to release. So Man Bairagi is one of the films which will be very close to my heart because it was my first project ever, and it's a small simple story of 50 minutes which is inspiring, which is motivating, and which also deals with the idea of finding yourself. क्योंकि इस एज में क्या होता है ना, द आफ्टर द adolescent age you tend to people and you tend to get very influenced or confused or go haywire of going that way, this way, which direction to choose and which passion to follow, because a lot of things are coming to your head and you can't choose one. So that story, Man Bairagi, deals with the story of very simple thing of finding yourself from within. It's as simple as that. wow. So I'm very happy that I was a part of that, and I'm looking forward that for the people to watch it, because वो story बहुत दिल से हमने shoot की है, बहुत दिल से बनाई है, और अच्छा लगता है जब अपना काम लोगों तक पहुंचता है, जैसे कि फैमिली मैन आया, लोगों ने पसंद किया. Right. So I'm also very nervous now if people will appreciate Man Bairagi also to the level of Family Man. Because the character is gonna be completely different. यहाँ हमने आपको complete different character में देखा, वहाँ हम आपको complete different character में देखने वाले हैं. The idea is that only of doing everything different from each other. That's So I think वो कहीं ना कहीं मेरा एक reason मेरा ये भी था acting को pursue करने का, कि सब चीज इतनी different हो, to basically to explore all lives and to touch as many hearts as you can. Wow. Such a nice answer, I would say. So, since you're talking about acting, बचपन से acting करने का मतलब मन था. You always wanted to be an actor. नहीं, I wanted to be a pilot actually. Oh. But फिर मुझे पता लगा कि पायलट बनने के लिए मैथ्स चाहिए होता है. तो फिर मैंने अपनी फ्लाइट को लैंड करा दिया. मैंने कहा नहीं भैया, मैथ्स तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैथ्स में मैं आई डोंट नो व्हाट हैपेंड यार रिया, मैं आज तक कभी पास ही नहीं हो पाया मैथ्स में, कभी हो ही नहीं पाया. तो वो पायलट का मेरा सपना, वो मेरी यूनिफॉर्म उतरती हुई दिख रही थी मुझे 9th के बाद, तो वो मैंने थोड़ा well I can give you a high five on to that, because maths has been one subject जिसमें मैं ऐसे बोलूँगी कि मुझे एकदम passing marks मिले हैं, like literally 40. So काश मुझे passing भी मिले होते. But you know what, I believe everything happens for a reason. मैं मैथ्स में कमजोर था, तो शायद मैंने कोई फिल्म देखी और फिल्म से this is actually what happened. मैंने कोई फिल्म देखी and I was so inspired, I was so moved for those 2.5 hours. It was an escape world for me. तो then नौटंकी तो मैं शुरू से ही था, तो then I thought कि यार क्यों ना लोगों को जो थोड़ा सा उनके लाइफ में टेंशन वाला माहौल होता है या कुछ भी किसी चीज का स्ट्रेस होता है, तो वो 2-2.5 लोगों को एस्केप वर्ल्ड में पहुंचाया जाए, जहाँ पे वो खुश हैं, जहाँ पे जो इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं और लोग एंटरटेन हो रहे हैं और खुश होके वापस जा रहे हैं. बिल्कुल. अब है how you felt when your character died? I don't know, I felt relieved. it was gone. It was not anymore in the mystery of following hard or doing the mission. So I was pretty relieved that way, but on the other way I was feeling यार क्यों मार रहे हो मुझे यार, मैं इतना भोला भाला बच्चा हूँ, मैं फंसा ही तो हुआ हूँ, मुझे प्लीज मुझे बचा लो ना, क्यों मार रहे हो मुझे. To be very honest, while I was watching the Family Man 2, and when episode 8 came, so I thought there would be a shift in heart, there would be a change in emotion. Maybe the person is gonna change, he's not the evil person and they'll escape, both of them will run or something, and then suddenly, oh shit, what is this? I was pretty sad कि मैं इतनी अच्छी एक फैमिली का एक हिस्सा था और वो जा रहा है जल्दी. मतलब I think मैं वो अकेला इंसान होऊंगा जो शो को देखते हुए प्रोग्रेशन पे उदास हो रहा होगा खुश होने की जगह. मैं सोच रहा था यार अभी मैं मरने वाला हूँ, मेरी मौत मेरे पास आने वाली है, मरने वाला हूँ. How was your experience working with Manoj sir? What is one thing that you have learned? तो मनोज सर के साथ मैंने शूट तो नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट, आप शो में देख भी सकते हो, बट हाँ हम उसके अलावा जो हम 2-3 दिन मिले
हम हमारा शूट डेट सेम था, तो हम 2-3 दिन मिले। तो एक बहुत ही इंटेंस सीन से मिले जहाँ पे अगेन मैं मरने वाला होता हूँ। तो उससे पहले आई वाज रिमेम्बरिंग इट्स अ प्रीटी इंटेंस सीन टू डू। और उससे पहले मनोज सर वाज वेरी वेरी चिटी चैटी, वाज वेरी जॉली, वाज टॉकिंग वेरी, ही वाज लाफिंग एंड वो टॉकिंग। तो उसके दौरान मैं सोच रहा हूँ यार, ये मैं थोड़ा सीन पे कंसंट्रेट कर लेता तो सही होता। आप तो कर ही, मैं मतलब मन में सोच रहा था ऐसा कि अरे यार इतना इंटेंस सीन है, आप हंस खेल रहे हो, ये क्या मतलब कैसे कैसे करूंगा मैं, और आप क्या कर रहे हो, आप क्यों इतना हंस हंस रहे हो। तो बातचीत तो मैं कर ही रहा था। उसके बाद जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बुलाना रिया, तो द शिफ्ट फ्रॉम फ्रॉम मनोज बाजपेयी टू श्रीकांत तिवारी, तो इट वाज इन अ मैटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट वाज। एंड वो देख के मैं एब्सोल्युटली आई वाज स्टन्ड कि अरे यार अभी तो ये इंसान ऐसा था, अभी ये कैसे इसने 1 सेकंड में कैरेक्टर पकड़ लिया यार। That is one thing which I learned from him, to differentiate your personal life and professional life and have a very good balance between both of them. That I think comes with experience also. और वो चीज बहुत बहुत आई थिंक इट्स इट्स इमेजिनरी। Yes, exactly. That shows how professional he is and how beautiful, like as an actor, he is. Amazing. Okay, so the next question, एब्सोल्युटली। yeah, if you could play any other character other than Kalyan or Salman in The Family Man, what would it be? हम्म। uh, can't see actually, I'm happy with, I was very happy with Kalyan and Salman. एंड मैं बहुत ही खुश था कि जो मैं पहले नर्वस था, बट जैसे लोगों ने प्यार दिया कल्याण और सलमान को, तो मैं नहीं सोचता कि मुझे कोई और एक्टर करना भी चाहिए, कैरेक्टर करना भी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी विद द लव एंड अप्रिसिएशन विच आई एम रिसीविंग। और कल्याण और सलमान दोनों से मैं बहुत ही खुश हूँ। तो कुछ और नहीं चाहिए, जो भगवान ने दिए चुपचाप मैंने ले लिया। That's so nice. When is the next time you'll be seen on screen? I mean, what is the next project that you're working on? अब मैंने बताया एक्चुअली, जो कोरोना के टाइम में थोड़ा सा स्लो हो गया प्रोसेस। नहीं अभी तक ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट स्टिल आई बिलीव कुछ भी मेरे लिए होगा, एंड आई विल बी हैप्पी टू डू इट, एंड होपफुली सी सून कुछ नया आए, Yes. कुछ इंटरेस्टिंग आए। Yes. And okay, so when it comes to acting, who is your mentor? Whom do you consider as your mentor? Riya, if you're asking me who, which is the actor who has inspired me, I I tend not to get inspired by actors, but the characters which they do. तो मैं Yeah. कैरेक्टर्स में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, एक्टर में नहीं। बिकॉज कोई कैरेक्टर किसी एक्टर ने बहुत ही बखूबी निभाया है। और जैसे रामलीला से में राम, अ, तमाशा में वेद, और पिंक में अमित सर, एंड फिर हेरा फेरी में परेश सर। तो मैं कैरेक्टर्स में ज्यादा बिलीव रखता हूँ एक्टर्स से ज्यादा, बिकॉज कैरेक्टर्स ही हैं जो आपको मूव करते हैं और जो आपको इंस्पायर करते हैं, और देख के आपको लगता है उफ ये क्या किया होगा। वो एक्टर और कैरेक्टर, वो कैरेक्टर बन जाना। तो दैट इज द थिंग विच आई लव द मोस्ट अबाउट एवरी एक्टर, कि कुछ कुछ कैरेक्टर्स, कुछ एक्टर्स ने बहुत ही ज्यादा बखूबी से निभाए हैं, तो मैं कैरेक्टर्स में ज्यादा बिलीव है। एज फार एज इंस्पिरेशन इज कंसर्न, तो मैं इंस्पायर होने के लिए तो बहुत लोग हैं। आप किसी भी आप रास्ते पे भी चलते हो, इट टेक्स अ हैवी आर्ट फॉर मी टू से दैट, बट आप रास्ते पे चलते हो, आप गाड़ी पे होते हो या किसी व्हीकल पे होते हो, और आसपास कुछ ऐसा कुछ होते हैं जो कुछ पैसा मांगते हैं या कुछ करते हैं, तो वो भी मैंने कहीं ना कहीं खुश देखे हैं कभी कभी। वो भी रात को जब अकेले हो जाते हैं, तो एक फैमिली जो उनकी इकट्ठा होती है, तो उनको देख के भी मैं बहुत इंस्पायर हो जाता हूँ। क्योंकि हैप्पीनेस, आई बिलीव, लोग बोलते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं ये मेरे पास ये कुछ है लेकिन ये नहीं है, ये गाड़ी है लेकिन वो नहीं है। तो हैप्पीनेस, आई बिलीव, इज अ चॉइस। Right. वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ खुश हो। एंड फॉर मी हैप्पीनेस इज ऑल व्हाट मैटर्स इन द एंड। तो मैं उनसे भी इंस्पायर हो जाता हूँ। और ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जिसपे अगर हम थोड़ा एक अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखें, तो हम क्यों नहीं इंस्पायर So हो true. सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है बड़े लोगों से ही इंस्पायर हो। So true, actually. Since आपने बोला कि आप कैरेक्टर से इंस्पायर होते हो, तो आपका फेवरेट कैरेक्टर आज तक कौन सा है जो आपको प्ले करने का मतलब लाइक काश मुझे ये रोल मिलता है, ये कैरेक्टर मैं प्ले कर सकती हम्म।
Tough question. यार ऐसा कोई सवाल पूछता है ना, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ. वेट, कोई कैरेक्टर ऐसा. आई थिंक अग्निपथ में अमित सर. Okay, nice. या वो पुराने वाली अग्निपथ, अभी हाँ, वाली. पुरानी वाली अग्निपथ, yes. राइट. तो उसमें अमित सर ने जो किया है कमाल, जबरदस्त. So अगर character play करने का मिला एक chance था, you would want to play that character. I'll be very scared though because उन्होंने जो benchmark set किया, I don't think I'll be able to touch that. But yes, since you have asked कि क्या character करना चाहोगे, yeah, I'd love to do that. That's so nice. That's so nice. A lot of fans have said the same question. Like they felt very sad when your character dies in Family Man. Do you have anything to tell them? Like not to feel sad. वो no, I won't say not to feel sad because that thing is supposed to feel sad. And मैं मानता हूँ कि जिसने जितना sad feel किया है वो उतना ही अच्छा है, because I believe मैंने उतने ही अच्छे से उस character में लोगों को बांधा होगा, engage किया होगा, so that people feel कि यार ये मरे ना यार, चाहे कुछ भी हो जाए. So Okay. I feel happy that people are feeling sad. Right. Okay, so one moment you cannot forget in your life from the set of Family Man. The set of Family Man. Every moment is unforgettable because the show was such. The show was very, very. एक इंस्टेंस जो मुझे याद आ रहा है दैट राज एंड डीके सर जब सेट पे होते हैं एंड इनफैक्ट सुपन सर, तो द एनवायरनमेंट व्हिच दे मेक अराउंड इन द सेट, द एनवायरनमेंट व्हिच वी हैड ऑन सेट, इट वाज very family type. It was very chilled out, and they make sure that every person, not just actors, cast and the crew also is very happy with the work they're doing. So the passion, the zeal which I was able to see in everyone's eyes while shooting for it was commendable, because एक काम करना अलग बात होती है, एक खुश होके काम कर. So I felt very great that every day was very like overwhelming, and it was very nice to be on set. Okay, that's like that sums it up all actually. Right. Exactly. So let's move towards our the last segment of this interview, that is rapid fire questions. And I'll be asking you some questions which will be, I would expect you to answer very rapidly and with a little fire into it. So let's move towards the I'm doing this for the first time. You do a lot of things for the first time. Yeah. There's always a first time. I wasn't expecting this. Oh, okay. Okay. So are you ready, Abhay? One thing. One thing. Okay. Ready. Moving ahead with the questions then. When you're not working, how do you like to spend your time? Thinking about work. Okay. What are you reading currently? I'm reading Manto ki Kahaniyan. Mantu ki Kahaniyan. Nice. What is your favorite book? Ukhraj Okay. by Gulzar Sahab. Ukhraj by Gulzar Sahab. What is one thing you're excited about that's coming up in 2021? One thing exciting. I think every day is exciting. I don't know. What is your most used emoji? These days. Thank you. Thank you. Okay, if you could win an Olympic medal for any sport, real, what would it be? Is there an Olympic? No. I think table tennis is a sport which I used to like a lot, and I used to see a lot of videos. So table tennis. Okay. If you could change your name, what would it be? Abhay to? Abhay is fine. I'm very happy with Abhay. Okay. What was your favorite subject in school? Maths. Because I was always out. Out of the class. Yeah.
Very right. Okay, what's your hidden talent? Like we know acting is the best you do, but what is your hidden talent? Talent? क्या कोई talent? I can't. I can. I think. I like to clean stuff a lot. I like to keep my house very clean and this thing and very tidy person. So Okay. I believe in cleanliness and also I am an environmentalist also. I reach every day with 2 dustbin bags to just clean whatever people have spoiled the beach with. Okay, next question. If you could spend a day in someone else's shoe, whose would it be? Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Okay. What's the last text you sent to anyone? I texted you only. Okay. What is one of your favorite memory till date? Favorite memory. I think it was very recent when my mother called me and said, "Beta, I'm very proud of you. The work you have done. लोगों ने बहुत प्यार दिया है." And ऐसे ही करता रहा. Who or what was your biggest teacher? I think life itself. Life itself. Very nice answer, actually. If you could instantly become an expert in something, what would it be? I wouldn't want to be an expert instantly. Okay, I believe in working. Yeah, I believe in working, practicing, and then achieving. Okay. Knowing what you know now, what advice you would give to your 16-year-old self? Change those silly captions which you had put in at 16 on Instagram. My life is my life. M-A-H. My life, my rules. Right. Yeah. Yeah. Where is your happy place? Home. Home. So sweet. Home, sweet home. Okay. What job would you be terrible at? Terrible at. I think remembering things. I tend to forget a lot of things. Okay. What is a dream you have that you have yet to achieve? Lot of dreams. Just one dream, but all the byproducts of it. I'm pursuing acting. ठीक है. I want to achieve. अरे यार. You can answer that. What? Yeah, I do. Being a pilot. Math still comes in. Right. Okay, so what is something you will say you will do but never will? Like you'll say that yes, I'll do, but you will never do that. No, if I say that I'll do that, I'll do that. I won't say if I won't be. I won't be doing it. Okay, what are you most afraid of? I was afraid of heights, but yes, I did paragliding, and I'm over it. And then you did a scene also in the movie where you are, I guess, at the 30th floor or something, and then you just looked up. 35th. Oh, I could literally hear my heart in my ears when I was standing there. Oh. But that scene was actually very scary and very dangerous, I would say. What are your top 5 favorite movies? Movies? Okay. Call Me By Your Name and Ram Leela and Tamasha and Trishul and Agni. If past lives are real, what was yours? Past life? Yes. I think I'd still be as simple as I am. I don't know what, but past life में हम pilot ले लेते हैं ना, तो वहाँ पूरी कर लेते हैं वो चीज. Right. So the last question: if you were ever caught dead, where would it be? Where I shot Family Man in Khar. Amazing.
So you answered all the questions. Oh, ask me I- what it was for me. I wish you all the very, very, very best for all your upcoming projects, I would say, and so that I can take more of your interview often. I'll be So, happy. I'll be happy to be here. I'll be very happy to be here. Thank you so much. Thank you. thank you, and thank you for Thank you. joining to us on Earshot at Bollywood's New Stars. Bye. Thank you so much again. Bye. Bye. Earshot, here and now.